Hello lovely students, welcome to English Notes. Now in this video we will discuss what is deconstruction. First of all, we define the definition of deconstruction. Deconstruction is the idea that words and text don't have one fixed solid meaning, and it works by taking them apart to show how their meanings are unstable. A simple analogy, think of a chair. We all know what is chair is for sittings, but if you take it for deconstruction it, you see it just a piece of wood and screws. You could use those pieces as a firewood or weapons or art. And these constructions trust this with ideas, book laws, and social norms. It takes them apart to show they can be understood in multiple, sometimes conflicting ways. There is a heading number one. No single meaning. A book, a speech, or even a common idea like justice or freedom does not have just one true meaning. Instead, by the author, different readers or contexts create different meanings, and there is a number two heading. Look for the contradictions. It actively looks from the hidden tensions and contradictions within the text or idea itself. It asks what does this argument depend on that it also tries to downplay or ignore. Number three, flip hierarchies. It's noticed how we sometimes think in pair we one side is seen as the better man, woman, speech, writing, rational, emotional. Deconstruction shows how the lesser term is actually essential to define the superior one, blurring the line between them. And there is a quick examples or a simple examples. Take the pair speech vs writing. Traditionally, speech is seen as a more authentic, direct, and present because the speaker is here. Writing is seen as a secondary, weaker copy. And this deconstructions ask, but wait, don't we need writing to preserve and understand the great speech of histories? Okay, there is a question. Does not speech itself rely on the same rules and structures as the writing? The boundary isn't as clear as we think. The copywriting turns out of the fundamentally necessary. In everyday use, when someone deconstructs a movie, they are not just summarizing it, they are pulling it apart to show how its message might be undermined by its own stereotypes or how it's accidentally real, sometimes different than what it's intended. रिकंस्ट्रक्शन का मतलब है तोड़ कर दिखाना, किसी चीज का एक ही मतलब होने के ख्याल को चैलेंज करना और ये दिखाना कि इसके कई मतलब निकल सकते हैं। तो हम पास डेली एग्जाम्पल्स में हम एक वर्ड है टीचर, उस्ताद, उसको ले लेते हैं। हम सब कहेंगे कि उस्ताद वो है जो सिखाता है, लेकिन इसमें डिकंस्ट्रक्शन ये कहती है या कि क्या वो सिखा रहा है वो खुद सीखा नहीं है या वो खुद सीख नहीं रहा, मतलब कि जो हमारा टीचर है वो कभी स्टूडेंट था या नहीं। क्या वो अगर स्टूडेंट था कभी उस्ताद, तो वो बच्चा भी तो था, क्योंकि बच्चे भी बड़े होते हैं, कुछ सीखते हैं, फिर वो उस्ताद बनते हैं। या सिर्फ स्कूल वाला ही उस्ताद होता है, ज़िंदगी के जो हमें एक्सपीरियंस होते हैं, तजुर्बे होते हैं, क्या वो उस्ताद नहीं हैं, जो हमें वो ज़्यादातर सिखाते हैं, जो तजुर्बे होते हैं हमारी लाइफ के। यानी उस्ताद की तारीफ ठोस नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है, उसे तोड़ कर देखो तो कई मतलब रूप वाला जो तस्वर है, वो निकलता है। तो इसमें अब हमें जो आसान तरीका है हमारा डिकंस्ट्रक्शन का सीखने का, वो क्या है कि किसी भी चीज़, कोई भी लफ्ज़ है, कोई भी कहानी है, तो उससे हम क्या करते हैं, उसका अगर हम उलट कर लें, जैसे कि अमीर का उलट गरीब है, फिर हम ये पूछें कि दरमियान वाले लोग कहाँ जाएँगे? क्या ये अपनी ही बात के उलट हो सकता है? मतलब कि जैसे कोई कहे मैं हमेशा झूठ बोलता हूँ, अगर ये सच है, तो ये झूठ है, अगर झूठ है, तो ये सच है। यानी मतलब फँस जाते हैं इसमें से। और कोई-सी बात मतलब कि इसमें छुपी हुई होती है, जैसे कि वो बहुत खूबसूरत है, खूबसूरती का जो एक पैमाना है किसने बनाया या बदसूरत कौन होता है। अब हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं फ़िल्म की, मूवी की, कि जो हीरो होता है, जो बूढ़ा हीरो होता है, वो हमेशा अच्छा होता है। मतलब कि इसमें रिकंस्ट्रक्शन ये पूछेगी कि क्या बूढ़ा हीरो कभी बुरा नहीं हो सकता या क्या जवान विलन कभी अच्छा नहीं हो सकता? क्या ये तस्वीर हमें उम्र के साथ मतलब तासब सिखा रहा है? और हमारे पास आखिरी बात ये है कि डिकंस्ट्रक्शन तबाह करना नहीं है, डिकंस्ट्रक्शन का मतलब ये गहराई से देखता है। जैसे आप किसी भी घड़ी को तोड़ कर नहीं देखते, उसको खोल कर देखते हैं कि ये कैसे चलती है।
तो सादा जो वर्डिंग है, मतलब सिंपल वर्डिंग में हम ये कहेंगे कि हर बात का एक से ज़्यादा पहलू हो सकते हैं, उसके फेसेस हो सकते हैं, और डिकंस्ट्रक्शन इन पहलुओं को ढूंढने का एक नाम है।